Good morning, dear students. Today we will discuss the question answer of the chapter 2 formula and the functions. Yesterday we have discussed the bookwork of this chapter and I think that is clear to all of you. Now today we will discuss the question answer of this chapter and you have to write down the question answer in your notebook. Bookwork in your book and question answers in your notebook. Now first question of this chapter is what is formula? Explain with the help of an example. फार्मूला क्या है और इसको एक्सप्लेन करो एक एग्जाम्पल के साथ. व्हाट इज़ द फार्मूला? व्हाई वी यूज़ द फार्मूला? वी यूज़ द फार्मूला फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस एंड फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद द इक्वल टू साइन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ऐड द टू नंबर्स 3 and 4, 3 is written in A1 and 4 is written in A2, then you will use the formula with equal to sign equal to A1 plus A2. So this is the formula, that was the example. Now what you will write in this answer of this one. First answer you have to write, formula are the user defined instructions to perform the calculations. फार्मूला किस लिए यूज़ होता है? यूज़र डिफाइन इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन हम डिफाइन करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए वो यूज़ द formulas. For example is equal to, I have taken the example of A1 plus A2, it has taken the example of B1 plus B3. This is the first answer of your question. Now we will move to the second question. What is call reference? Cell reference, sorry, it is written the call reference, it will be cell reference. Mention its type. What is the cell reference? नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल रेफरेंस? मेंशन इट्स टाइप. सेल रेफरेंस जो होता है दैट इज यूज टू रेफर अ सेल. तो सेल रेफरेंस को यूज करने के लिए हम, द सेकेंड आंसर इज सेल रेफरेंस इज द सेल एड्रेस. जो किसी सेल को रेफर करने के लिए व्हाट वी यूज द सेल एड्रेस टू रेफर अ सेल. So the cell address that we use in the formula is known as the cell reference. And we have, I taught you about the three references. First was the relative, second was the absolute, and third was the mixed reference. Absolute reference क्या था? Relative reference was to you when you copy and paste, copying any cell's formula, and that is pasting into the any another formula. Then it will just change the number of the cells. In absolute reference it will not change the reference of the cells, and mixed it is the relative plus absolute. When we are using these two references, then that was known as the mixed references. So this second question is clear to you. Now we will move to the third question, this one. What do you know about the absolute reference? अभी हमने सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ा है. सेल रेफरेंस सेल एड्रेस होता था और सेल एड्रेस में भी हम जनरली रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करते हैं. एंड नाउ इट इज़ आस्किंग what do you know about the absolute reference? Explain with the help of an example. Absolute reference क्या होता है? Now it is written, absolute reference is used when we do not want to change the address of the cell. जब हम किसी भी सेल के एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहते. रिलेटिव रेफरेंस में सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है, बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में सेल का एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते. वाइल कॉपिंग द फार्मूला टू अनदर सेल, जब हम किसी फार्मूला को दूसरे सेल में कॉपी कर रहे होते हैं, देन वी हैव डन दिस प्रैक्टिकली, then we use the absolute reference. So when we use the absolute reference, then we need to add a dollar sign before the column and the row number. So how we can use it? For example, we are using A1 and A2, then we will use the dollar sign before A and 1 also. A1 दोनों के आगे, A के just before the A and just before the 1 we will use the dollar sign, as here it is used. It means when we are copying this formula A1 plus A2 into another cell, then A1 and A2 will not change to any another number. It will automatically change. It will automatically take the number that is written A1 and A2 cell. That number will not be changed. This is the absolute reference.
minutes. Now move to the next question. Fourth question. What do you understand by the term concatenation? Concatenation means concat करना. किसी भी दो words को अगर आप concatenate करना चाहते हो, explain with the help of an example. अगर हम स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ हैं, अगर हम उन्हें कंकैटिनेट करना चाहते हैं तो एम्परसेंट फंक्शन यूज़ करते थे, दैट वी हैव यूज इन आवर प्रैक्टिकल सेशन. एंड इफ सिंपली वी वांट टू ऐड द टू नंबर्स 3 + 4, देन वी यूजिंग द सिंपल फार्मूला, एडिशन फार्मूला. एंड कंकैटिनेशन इज यूज्ड, this term is used when we want to concatenate two string words like Raj Kumar. Then Raj plus Kumar we want to do, then we will not use Raj plus Kumar, we will use Raj ampersand Kumar. Then it will concatenate the two string and it will show the result Raj Kumar. I will show you the answer of this. Fourth answer, adding of two or more text value is called the concatenation. Adding of two or more text value is called the concatenation. टेक्स्ट वैल्यू मतलब करेक्टर वैल्यूज़ मतलब वर्ड्स. जब किसी दो वर्ड्स को आपस में करेक्ट करते हो, करेक्टर्स को हम इंग्लिश कंप्यूटर टर्म में डैट इज़ नोन एज द टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टाइप अ स्ट्रिंग वैल्यू इन सेल A1 एंड B1, इसको हम टेक्स्ट वैल्यूज़ भी बोलते हैं. व्हेन वी आर राइटिंग सम वर्ड इन कंप्यूटर टर्म, that is known as the text value and that is also known as the string value. So in A1 we are writing a J and in B1 we are writing a Hind, and enter the formula A1 ampersand B1 in cell C1, then it will show you the Jai Hind in the cell C1. So this is the concatenation way how we can concatenate the two strings. So I think this question is clear to you. First, second, third, fourth, these all 4 questions we have done practically in our practical sessions. So we need not to again done the practical of this part again and again. Now move to the next question. That is the fifth function. What do you mean by a function, and name some of the function? Now fifth, what is the function? Functions are the predefined or inbuilt formulas that comes with the Excel. फंक्शन क्या होते हैं? जो इनबिल्ट फार्मूलाज हैं, जो बने बनाए फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सम फंक्शन यूज़ किया था, SUM. सम के व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द सम फंक्शन? दैट इज़ you are passing the value as an argument in the sum function. It will add up all these values. This was the sum function. Similarly, we have used the maximum function, minimum function. तो these are the inbuilt function जो as it is हम उठा के उसके brackets में जो argument है वो values pass कर देते हैं, उन values पे वो function apply होता है and then it gives us the answer. तो functions are the predefined inbuilt formula that comes with the Excel. They eliminate the chances of writing the wrong formula. हम इसमें wrong formula नहीं लिखते. They accept the arguments and return the values. वो arguments हम उसमें argument पास करते हैं, मतलब सम के ब्रैकेट में, एवरेज के ब्रैकेट्स में, पावर के ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट के ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यूज़ एज आ आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो सम फंक्शंस उन वैल्यूज़ पे वर्क करके दैट विल गिव्स यू द आउटपुट. तो जो वैल्यूज़ दैट इज़ पास इन द ब्रैकेट दैट इज़ नोन एज दिस आर्ग्यूमेंट and it gives you the result that is known as the return value. So in simple language, functions are the inbuilt formula that we uses. It accepts the argument and it returns the values. Some of the common functions are sum, average, mode, power, square root. इन ये सारे आपके नोटबुक, आपकी बुक के अंदर एक टेबल में सारे फंक्शंस दिखाए हुए हैं. यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली एज इट इज़ गिवन इन योर नोटबुक, in your book. Now question number 6 is, what are the rules to enter a function? Whenever you are using a function, there are some rules to enter a functions we have to keep in mind, otherwise it will show you some errors. So what are these rules that we have to keep in mind when we are entering a functions? That are,
So these are the 4 rules to enter a functions. Number 1, all Excel functions that must begin with equal to sign. जो भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं, जो इनबिल्ट फंक्शन है या हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं या हम कोई बना बनाया फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो ऑलवेज दैट विल बिगिन इन एक्सेल विद द इक्वल टू साइन. Suppose we are using the sum function, then before some functions we will apply the equal to sign. Next, function name must be a valid Excel name. अगर आप कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हो दैट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन, तो एज इट इज़ मेड यू हैव टू यूज़ इट एज इट इज़. फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन के लिए SUM है, SUMI यू कांट यूज़. AVERAGE, this is the average function, so you can't use AVER, you have to use the complete function AVERAGE. So this is the valid function names. Next, third rule, function name must be followed by opening and closing the bracket like this. In this, after the function, one bracket is opening and at last it is the closing bracket. Next, parenthesis contains the arguments within it. इस brackets के बीच में there should be some argument, some values. On that values that functions will work. For example, we have given the sum and then the bracket close. तो sum function किस पे apply होगा? To which values it will do the sum? तो sum will be applied on A1 and A5. पर A1 and A5 में ये कोमा हो तो A1 and A5 को प्लस करता. इट इज़ रिटन A1 colon A5, मतलब इट इज़ वी आर गिविंग द रेंज. इट विल डू द सम ऑफ द A1 to A5. तो A1 से लेकर A5 तक के सेल्स में जो भी वैल्यूज़ हैं इट विल गिव आउट द सम ऑफ दिस ऑल द वैल्यूज़. नाउ आई थिंक दीज 5 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. नाउ यू हैव टू राइट डाउन these question answers in your notebook and you will send me the WhatsApp copy of that. You will send me the pic of your work done on my WhatsApp number. I will check who are doing and who are not doing. It will consider as your attendance also. Now the chapter 1 and chapter 2 of your book is completed, and it was these 2 chapters was in your was under the syllabus of your April month, and we have completed the April month syllabus, and these 2 are clear to you, I think. But still, if you are having any problem, you can contact me on my WhatsApp. And now in my next video I can take your small test also, so please be ready and be prepared. These 2 chapters I will take the test of chapter 1. We will see how I will take. I will send you some worksheet on which you have to do this. So I am sending this, and you will I will send some worksheet to you of the chapter 1. Now this is your homework that you will read and learn the question answer and the book work and the activity question, मतलब binary, subtraction, addition, multiplications. You will keep in mind how we can do it. So I will send you the worksheet and you will solve it and send me on my WhatsApp group. In my next video I will give it to you. And for this week it is your homework. Complete your notebook of the 2 chapters, chapter 1 and chapter 2, and prepare the chapter 1 for test. So thank you and have a nice day.